Hi guys, Welcome back to the Rover Vibes. Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions, India, Gurgaon. So guys, I'm your fitness coach, sports nutritionist, anabolic coach and special population expert. I am with Samara. She is psychic energy reader, healer, spiritual and life coach. Spiritual life coach. बहुत ज़्यादा hand लगा दिए. हाँ Anyway, जी. so welcome back. We are here to talk about a very interesting topic, which is called Voice for the Voiceless. ये हमने एक स्पेशल फीड रखी है जिसपे हमें एक astounding response आया है. So we are here and we are late. So I just hope that people who are interested and who wanted to attend this to get the notification that we are live and they can watch this recorded feed later as well. Rahul, would you like to tell what this topic is all about? सी गाइस, आज का जो सेशन होने वाला है, आज का कोई सेशन कोई भी फिटनेस या न्यूट्रिशन या रेकी स्पिरिचुअल हीलिंग या फिर हमारा टैरो कार्ड से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है, जिस तरह से आप डिस्प्ले पे पढ़ ही पा रहे होंगे, वॉइस फॉर द वॉइसलेस. ठीक है, तो उनकी वॉइस बनो जो बोल नहीं सकते हैं. ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आपको ये नहीं बता सकते कि उन्हें भी उसी तरह से हेल्प की जरूरत है जिस तरह से आपको पड़ती है. तो यहाँ पे कमेंट है, रिदिल तिवारी, गुड टू सी यू बोथ. थैंक यू रिदिल. थैंक्स अ टन. So like I said, in this feed is also going to be about the voiceless. And before that, I would also like to mention that here we are going to give bonus energy guidance to a very few people. Okay, in order to do that, you need to share this feed. जी, तो आपको अगर आप लकी हो तो आपको इस जस्ट डिस्कशन और ये वॉइस फॉर द वॉइसलेस सेशन के बाद टैरो कार्ड रीडिंग मिल सकती है. ठीक है, लेकिन आपको इस फीड को शेयर करना होगा. अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना होगा. ठीक है, उसके बाद कोई 5 लकी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी. सो गाइज, प्लीज शेयर दिस फीड. आई होप रिदिल आपने शेयर कर दी है दिस फीड, ये वाली फीड. सो आज का जो सेशन है, ये वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये रखा किस लिए हमने? ठीक है, प्लीज समारा. ये सेशन हम एक्चुअली पिछले लास्ट वीक करने वाले थे, because of certain things we had to postpone this, and we have a very interesting story to share with you, which we will share at the end. Before I give the readings out to a few lucky people, we're going to share the story with you. The reason behind this, first of all, अगर हम ये voiceless की बात करते हैं, we also like to talk about the people who have the voice. So हम लोगों के पास एक आवाज है जो कि बहुत जरूरी है, right? And this voice can be used to put to good use, and that is where you can do your bit, the acts of kindness, and ये सारी चीजें एक आवाज उठाने से शुरू होती है, right? बिल्कुल सही. So here पहले तो voiceless पे हम बाद में आते हैं. पहले हम सिर्फ ये बार बार बात करना चाहते हैं कि we are humans and we have this gift of humanity, right? And Rahul has very interesting things when it comes to humanity. Is one of the things that he feels very strongly about. So Rahul, why don't you tell us about what you feel about how we can help people when it comes to being human? अगर ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करें हम, तो हमारी मतलब नेचर ने ही इस तरह से बनाया है हमें. अगर हम किसी को देखते हैं और उसको पर्सन को हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम उसको जानते भी नहीं हो, ठीक है, तो हमारा मतलब माइंड इस तरह से चलने लग जाता है कि हम उसकी हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं. उस ह्यूमन की, उस बंदे की या उस लेडी की, किसी की भी XYZ की हेल्प करने के लिए हम खड़े होते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसा दिखता है. हमारे मन में इमोशंस उठते हैं कि नहीं यार, इसको हेल्प की जरूरत है, तो हम कहीं ना कहीं अपना काम छोड़ के, टाइम निकाल के उस बंदे की या बंदी की हेल्प करने लग जाते हैं, जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं था आज से पहले. ठीक है, या फिर कनेक्शन था भी, तो ये एक मतलब ह्यूमन नेचर है. ठीक है, जो हमारे जैसे दिख रहा है, अगर उसको हेल्प की जरूरत है तो हम हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं. राइट. एंड ये हेल्प करने के लिए पहली बात तो एक इमोशन फील होना बहुत जरूरी है. देयर इज वन थिंग कॉल्ड कंपैशन.
Compassion means being able to feel the plight of the other people, या उनकी जो miserable condition है उसको समझना, उसको understand करना, उसको feel करना. So Right. if you do not have this in you, then this feed is not for you. I would request you to leave this feed, because then you will not like what we are talking about, right? But if you do feel something for the humanity, if you have compassion for others, if you're able to understand from their point of view, if you're able to see the world from their point of view, only then you can help somebody. So अगर किसी का accident हो जाता है, let's say on the road, how do you respond to that situation makes all the difference. So are you one of those people who just, it doesn't make a difference to you, आप सब सिंपल पास करके निकल जाते हो? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी गाड़ी रोकते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, then they leave, right? Then there are certain people who actually stop to see what happened, and out of those people who stop to see what happened, there are certain people, उनमें से कुछ लोग निकल के आगे आते हैं जो कि कोई एक एक्शन उठाते हैं, right? So because they are so compassionate and their emotions tell them to take action. They are so inspired by the pain of others, they are so inspired by what is happening in front of them, and being a human, they take the action. So Rahul, what do you do in such a case? इस तरह का कुछ भी इंसिडेंस मेरे सामने घट रहा होता है तो मुझे पहले ये देखना पड़ता है कि ये इंसिडेंस एक्चुअल में जो हुआ है इसमें मतलब जो विक्टिम है कितनी प्रॉब्लम में है वो, ठीक है. और मैं हमेशा देख के रुक जाता हूँ, मतलब 100 में से 95% केसेस में मैं रुक जाता हूँ. वो 5% ऐसे होंगे जिनमें कि मुझे उनसे ज्यादा जरूरत होगी तो अलग बात है, ठीक है. मैं उन केसेस में रुक जाता हूँ, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो, किसी की चोरी हो गई हो, सडनली किसी की चोरी हो जाती है, बस में से किसी का पॉकेट निकल गया, किसी कार चोरी हो गई, किसी की बाइक चोरी हो गई, या कोई पानी में बह रहा है, ठीक है. तो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. See, it's up to you whatever you're capable of doing. अगर आप में कैपेबिलिटी है और आपको लगता है कि आप एक कंफर्ट लेवल पे हो जहाँ पर आप इस तरह की चीजें कर सकते हो, then I think you should step up. I remember there was a time when we went to sector 29 in the night. There was this girl who was walking on the road and हमारे सामने कोई बंदा उसका I think wallet लेके भाग गया था, and he was running like really fast. So रोती हुई भाग रही थी. वो बेचारी उसके पीछे रोते हुए भाग रही थी, and I remember that Rahul not only drove his car till the time he could, and then when he stepped in the park, he parked his car in the middle of the road, not caring about the traffic, obviously because you're trying to help somebody. And I remember jitna bhi comfortably he could park, he just parked and he started running after that person just to help somebody out, because that girl over there who was crying just said that I have all my cards over there, my phone is there, I can't call my family members, what will I do? He's just taken my purse, right? तो इस तरह का इंसिडेंस आपके आगे भी हुआ होगा, और आई होप आपने भी मतलब किसी न किसी तरह की मतलब कोशिश की होगी उस कंडीशन में, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की, ठीक है. तो आप वहां पे प्रायोरिटी रखते हो इस चीज की कि यार कोई मेरे जैसा बंदा है, या फिर ये मेरे साथ भी हो सकता था, ठीक है. तो मुझे भी हेल्प की जरूरत पड़ती तो कोई ना कोई आता, तो किसी और को जरूरत है तो मैं भी आऊंगा, ठीक है. मेरी थिंकिंग भी ये रहती है, ठीक है. वहीं मैं उसके पीछे भागा, वो जो चोर था उसके पीछे भागा मैं, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं. किसी का एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले मैंने कार रोकी और मैंने बिना किसी परवाह किए उठा के अपनी कार में डाला, बिना ये सोचे मेरी कार में ब्लड हो जाएगा या क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा. And I think these things happen with us very frequently because ये चीज हम करते हैं जब भी कर पाते हैं. तो वहीं मैं हॉस्पिटल भी लेके जाता हूँ, गया हुआ हूँ, मतलब आप लोग भी मतलब हुआ होगा इस तरह से, आपने भी या फिर देखा होगा बहुत लोगों को, ठीक है. तो वहीं पे आप उन लोगों की तो हेल्प कर रहे हो जो लोग आपकी तरह दिख रहे हैं और मुसीबत में हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग आपको बता नहीं सकते हैं या जो लोग आपकी तरह नहीं दिखते हैं, ठीक है, और आप जैसी कंडीशन में नहीं रह रहे हैं, उनको भी हेल्प की जरूरत पड़ती है. राइट, एब्सोल्युटली. एंड ये सारा का सारा ना इमोशंस का खेल है. इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू फील, अबाउट द कंपैशन दैट यू फील फॉर पीपल, and about how you inspired you get to take the action, because taking action is something that requires a push, it requires an effort. So there's different ways that he's trying to tell you that you can help other people. There are donations that you can make, right? Donations आप cash में मतलब donate भी कर सकते हो for the causes. Okay, ये चीज जानी बहुत जरूरी है कि that cause and the money that you're spending or giving out, ओके, ये सही जगह स्पेंड हो रहा है कि नहीं.
That is what you need to ensure. But there is also one of the ways to actually give to the community and actually share the blessings. मतलब भगवान ने आपको capable बनाया है कि आप किसी की help कर सकते हैं. That is a blessing that you have. And when you share that blessing with people by making efforts in making donations, या किसी को किसी चीज की जरूरत है, आपके पास वो चीज है, आपके किसी यूज में नहीं आ रही है, so you give that away without thinking about किसको आप दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो. You don't judge the other person about उसने आपको कैसे ट्रीट किया था या नहीं ट्रीट किया था. So you don't do that, right? And when you start doing that कि नहीं इसने तो मुझे लास्ट टाइम इस तरह से बोला था, मैं इसको हेल्प नहीं करूँगा. So वहाँ जो आपकी भावनाएं, आपकी जो इमोशंस हैं, वो सारे आ जाते हैं. ego, jealousy, revenge, negativity, anger, frustration, doubts, fears of being judged, worries. ये सारी जो चीजें हैं, जब आप इन सारी चीजों से निकल के अगर इसको सिर्फ ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जैसे आपको बनाया गया है वैसे ही दूसरे को बनाया है. You are only controlling your actions, you're not controlling somebody else's actions, right? So you have no right to judge the other person. Whatever he is trying to do, that is his karma. You do your karma, and if you are capable enough to help somebody, you help that person out, Right. right? And efforts आप कितने ways से कर सकते हो, किसी को help करके, किसी को चीजों को देके. So this is called paying it forward, right? अगर आप कहीं खड़े हो and you see somebody is in need या किसी का सामान गिर गया है, okay, so are you inspired to help the person out कि सामान उठा के दे दिया, right? किसी लाइन में आप खड़े हो, if you see somebody is running short of cash about $10, $15 कम हो रहे हैं किसी के, and because of that कई बार हो जाता है लोगों के साथ, right? So you pay that extra, okay? Even 100, 200 doesn't matter. किसी के पास, let's say if you are overhearing a conversation with किसी का birthday है and but that person cannot afford a cake, imagine just buying a cake can get so much of smile and happiness to that person, right? So these are the kind of things that you can do. This is called paying it forward, and then it comes back to you. So whenever you are in problem, the universe knows the kind of things that you have done. The universe knows the kind of things that you have given out, and the universe makes sure that you have one source or the other who is there to fix the problem that you have. Right? That is what the circle goes. That is how the energy flows. That is how the energy works. And that is how you create more abundance in your life, by giving it out. When you don't give it out, you will not receive. But trust me, when you give it out, you will receive 10 times more. Right. So इसको अगर आप एक इन्वेस्टमेंट समझ के कर रहे हो तो भी गलत है. इसको फील करके करना बहुत जरूरी है, because it is about the compassion, right? हाय ज्योति मैम, हाउ आर यू? सो वहीं मैं अभी, ये तो बात रही ह्यूमैनिटी की. अभी आते हैं हम एक्चुअल ह्यूमैनिटी से जिस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं हम, ह्यूमैनिटी से कनेक्ट कर रहे हैं हम सीधा सीधा वॉइसलेस. ठीक है, वॉइसलेस से मतलब है, ठीक है, वॉइस फॉर द वॉइसलेस से मतलब है कि उनकी आवाज बनो जो वॉइसलेस हैं. वॉइसलेस कौन है? आपके आसपास देखिए कौन है. आप कभी ऑफिस के लिए निकलते हो या घर से बाहर वॉक के लिए निकलते हो, आप अपने 100 मीटर के एरिया में भी देखो, 50 मीटर 10-20 मीटर के एरिया में भी देखो, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उन लोगों से ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है जो कि आपसे बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जो आपको बोल सकता है वो केपेबल है अपनी हेल्प खुद करने के लिए भी. ठीक है, लेकिन जो बोल ही नहीं सकते, वो अपनी परेशानी भी आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, आप किस तरह से उनकी हेल्प कर पाओगे? ये बड़ा ही मुश्किल काम लगता है कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को इनफैक्ट. ठीक है, तो वॉइस फॉर द वॉइसलेस में यही हम बताना चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी ऐसे जीव जंतु हैं, लाइक कुत्ते हैं, गाय है, मंकीज हैं, या पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे. ठीक है, आप कहीं ना कहीं हर 2 से 4 स्टेप 6 स्टेप पे इन चीजों से कवर रहते हैं. ये चीजें आपके आसपास रहती हैं. It is in the nature around you. राइट. ठीक है, तो कभी आप ये सोचिए कि आपके आसपास शेर को क्यों नहीं रखा? ऊपर वाले ने आपके आसपास शेर को क्यों नहीं बनाया? या फिर आपके आसपास चीते को क्यों नहीं बनाया, कैंगरू को क्यों नहीं बनाया? ठीक है, उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि वो जो जीव हैं, वो जंतु जो हैं, वो एनिमल्स खुद कर सकते हैं, खाने का भी, पीने का भी. ठीक है, हंट कर सकते हैं. ठीक है, उनको आपके आसपास नहीं रखा है. जिनको भी आपके आसपास रखा है, तो गॉड ने एक तरह से हमें जरिया बनाया है
उनकी आवाज बनने का। Right. ठीक है, चाहे वो कुत्ते क्यों ना हो, चाहे वो बिल्लियां क्यों ना हो, चाहे वो मंकीज क्यों ना हो या बर्ड्स हो, ठीक है, आप एक छोटा सा एफर्ट लगाकर इन सबकी आवाज बन सकते हैं। Correct. ठीक है, ये हमें बेशक बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस हमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि इनको कितनी हेल्प की जरूरत है, कितने नीडी हैं ये। ठीक है, आप अगर एक बार फील करके देखो, कभी किसी कुत्ते के पास जाइए, कार्ड भी जाएगा, थोड़ा ध्यान से जाइएगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कभी किसी भूखे कुत्ते के पास जाइए, उसको एक बार बिस्किट डाल के देखो, पानी पिला के देखो। ठीक है, आप एक बार खिला पिला दोगे, वो जब भी आप आओगे आपको हमेशा इस तरह से ट्रीट करेगा कि आपको देख के खुश हो रहा है। Right. ठीक है, आपका सारा जो मूड ऑफ भी अगर किसी रीजन से हो रखा है, उसको देख के वो भी मतलब दूर सा हो जाएगा। ठीक है, Right. कभी आप गाय को खाना खिला के देखो सुबह सुबह, आपको अच्छा फील होगा, फील गुड फैक्टर। ठीक है, जब ह्यूमन की किसी की हेल्प करते हो, अपने जैसे दिखने वाले लोगों की हेल्प करते हो, उस टाइम पे मतलब एक तरह की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपकी लगती है, Right. कहीं ना कहीं से उस बंदे की ब्लेसिंग्स लगती है। ठीक है, ये जो पेट्स हैं, ये जो जीव जंतु हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, ये बर्ड्स हैं, पक्षी हैं जो बोल नहीं सकते हैं, इनकी भी ब्लेसिंग्स उतनी ही लगती है जितनी एक ह्यूमन टू ह्यूमन लगती है। Right. ठीक है, तो आप उनकी हेल्प करके देखिए। हेल्प करने का अब आपको कैसे पता चले कि उसको हेल्प की जरूरत है या नहीं है? ठीक है, सिंपल सी बात है, कभी आप घर के बाहर निकलोगे, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, आप खुद भी चाहोगे कि अगर मैं बारिश में भीग भी जाता हूँ तो ज्यादा देर बारिश में ना रहूं। ठीक है, तो वो कुत्ता जो कि रहते, जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो बेचारा बारिश में भीगे जा रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है उसको घर में बुला लो, अब रजाई में सुला लो, बेडरूम में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक शेल्टर दे सकते हैं, या अपने घर की सीढ़ियों पे बाहर बिठा सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं उसको कि वो जब तक बारिश हो रही है बैठे वहां पे, उसके बाद वो वापस चला जाएगा, उसको तो वहीं रहना है जहाँ पे रह रहा है। लेकिन जब भी उसको परेशानी हो रही है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प करो। Correct. जब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे सबसे पहली चीज जरूरत होती है हर किसी को पानी की। ठीक है, तो उसके लिए मतलब पानी आप कहीं भी किसी भी जार में, किसी भी मिट्टी के बर्तन में, आसपास कहीं भी थोड़ा सा खड्डा खान टाइप का होता है, उसमें आप पानी डाल सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ये बोल नहीं सकते हैं आपसे कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन जब आप पानी डालेंगे आप देखना जरूर, वो आके बहुत सारा पानी पियेंगे, क्योंकि उनको भी आपकी तरह प्यास लगती है। ठीक है, रात के टाइम या सुबह के टाइम आप देखोगे कुत्ते घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। वो क्यों घूमते हैं? उनको बस हेल्प चाहिए कहीं ना कहीं से। उनका, हमारा गोल होता है कि हमें सुबह जॉब करनी है, वापस घर आना है, फैमिली को टाइम देना है, चैन से सोना है, सुबह ये करना है, वो करना है, रात को वेब सीरीज देखनी है, 100 चीजें हम अपने लिए सोचते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेट्स हैं, जीव जंतु है, उनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि आज हम जिंदा रह जाएं, आज कहीं ना कहीं से अच्छा खाना मिल जाए, एटलीस्ट खाना मिल जाए, पानी मिल जाए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसका जरिया बन सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। वही ब्लेसिंग्स आपको उतनी ही मिलेगी जितनी ह्यूमन टू ह्यूमन मिलती है। Right. And if you are already doing these things, please let us know. We would love to know about if you're doing such things, because this is something which is, which you're doing to the nature. This is something which you're giving back to the nature. जैसे ही आपको बनाया है, वैसे ही इन animals को भी बनाया है, whether this is a cow or a dog or anybody for that matter. So ये सारे भी nature के ही creations हैं, and when you give it to them, it makes more sense because they do not have a voice. They cannot express themselves. Their ability to express is in their own language, and हर एक को वो language समझ नहीं आती है, because of which हम उन्हें misinterpret करते हैं, हम उनको threat समझते हैं, हम ये समझते हैं कि वो हमें काट लेंगे, because हमें उनकी language पता नहीं है। And there is a lot of research on this, because जब आपको भी same surrounding में रखा है और एक animals को भी same surrounding में रखा है, जो कि domesticated animals के नाम से जाने जाते हैं, the dogs and the cows, उनको भी same environment रखा है, like he said, why there is not a lion around you. Lion is supposed to be in the jungle, right? क्योंकि अगर आपके अराउंड होता तो आपको खा जाता, राइट? वो नेचर का रूल ही नहीं है, राइट? तो जो जंगल रूल के हिसाब से भी देखा जाए तो lion is supposed to be in the jungle, so that is where they are, where they hunt and they live. And these animals, the domesticated ones, the cows, which हम जो कहते हैं ना गौ माता, और इंडिया के बारे में, एंड भी जो हम गाय को पूछते हैं,
ओके जो हमारे आसपास घूम रही हैं हम उनको ही खाना खिला दे तो बहुत अच्छी बात होगी, एटलीस्ट अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपना बदल के whatever is left over, please feed it to them. I have seen here where we stay here, रोज देयर इज अ स्पॉट जहां पर टाइम टू टाइम कोई ना कुछ डालता रहता है। एवरी डे आई सी देयर इज स्पिनच ओवर देयर एंड देयर आर टन्स ऑफ काउज हु कम एंड ईट दैट। थोड़ी टाइम में वो फिर से रिफिल हो जाता है एंड देयर इज अ स्पॉट जो इन्होंने बना रखा है जहाँ पर लोग अपने जो भी लेफ्ट ओवर्स होते हैं, कुछ लोग स्पेशली बना के इनको देके आते हैं, दे गिव देम फ्रूट्स एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिचएवर इज गुड फॉर देम। तो जो चीज आपको न्यूट्रिशन देती है सेम चीज उनको भी न्यूट्रिशन देती है और आपके अराउंड उनको बनाया ही इसलिए है क्योंकि आप लोगों को कोएग्जिस्ट करना है। सो वी आर सपोज्ड टू कोएग्जिस्ट विद देम। दैट मींस इफ दे डू नॉट हैव अ वॉइस वी कैन बी देयर वॉइस एंड एक्सप्रेस इट। कोई अगर आप देख रहे हो किसी को जो कि लेट्स से स्ट्रे एनिमल्स को बहुत मिसट्रीट करा जाता है तो वहां पर भी यू नीड टू स्टेप अप एंड स्टॉप देम। और हम एक तो देखते हैं ऊपर से स्टॉप नहीं करते और अगर कोई और कर रहा भी होता है या कोई और खिला भी रहा होता है हम उसके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं। अब खुद तो कुछ करना आपने नहीं है, ठीक है, और कोई कुछ कर रहा है तो उसमें भी आप उनको नीचे लेके आए। व्हाई? बिकॉज क्या जरूरत है आपको करने की? अरे वो तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, उसको करने दो, तुम्हारा काम थोड़ी है ये सब, राइट? ये काम जो है कोई लिख के कोई रूल बुक है क्या इसकी? I have not seen any rule book which says that do not feed the animals. There is no rule which says do not feed, do not give water to the animals. जगह जगह पर आजकल जितनी ये voluntary organizations हैं and NGOs हैं, Voice for the Voiceless नाम से भी I think there is a NGO, right, which we met I think in one pet fed जब हम गए थे before the pandemic, and these people keep a shelter where they keep dogs. And trust me, we're not talking about just the indie breed, we're talking about breeds in the sense we've seen labradors as well over there. I think there were beagles as well which were abandoned on the street. आप डॉग को लेके आते हो शॉपिंग की तरह, ठीक है, उनको घर में खिलौने की तरह रखते हो और जब आपका मन भर जाता है तो आप कहते हो हमसे संभल नहीं रहा, and then you abandon your pet. Will you do that for your child? कल को आपका अपने बच्चे से मन भर जाएगा तो आप उसको सड़क पे छोड़ोगे। So don't call yourself an animal lover if you will cannot be human to this extent. It requires that kind of a courage. It requires that kind of an effort, right? And at least अगर आप पे इतनी capability नहीं है, there are cases जहाँ आप financially support नहीं कर सकते इन causes को, so there are other things that you can do. Right now, what you can do, you can spread the word. 11:11 पे मुस्कान का कमेंट आया है। Hello, ma'am and sir. How are you? I will pray for you both be of you. safe and Be safe secure. and secure. Thank you so much, Muskan. We pray the same, and what a wonderful timing for this comment. So again, You angel are such numbers. an angel. You're such an angel, right? Such an angel. Yeah. So all of these things that we're talking about, it's highlighting the grave aspect जो जहाँ humanity इतनी corrupt होती जा रही है कि हम किसी को भी किसी चीज में भी पढ़ने से पहले 10 बार ये सोचते कि हमें कोई backfire तो नहीं हो जाएगा। जब तक आप नहीं चाहते आपको कुछ backfire नहीं होगा। It's up to you. Everybody has their own power, and the biggest power that you have is your voice and is the actions that you can do with that. So if you have this voice, please share this feed and let it be known to other people so that they can do the same thing around them. आपको कुछ नहीं करना, अपने आसपास ही देखना है क्या है. You don't have to do anything special. नेचर ने इस तरह का बनाया, नेचर की ही रिस्पेक्ट करो, ठीक है, उन एनिमल्स की करो या ना करो, एक नेचर की ही रिस्पेक्ट करो। और अगर आप सपोज मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि नेचर ने, जैसे मैंने बताया, लॉइन को आपके पास नहीं बनाया, ठीक है। अगर पेट्स की भी बात करो, अगर डॉग्स की भी बात करो आप, तो ऐसे डॉग्स होते हैं जैसे लाइक तिब्बतियन मैस्टिफ, ठीक है, ये हिमालयन जो मैलेमूथ होते हैं, ठीक है, वो डॉग्स ब्रीड हैं जिनके बहुत बड़े बड़े हेयर होते हैं। सेंट बर्नार्ड जैसे लोग कह रहे हैं, ब्रीड्स जो होती हैं, इनके बड़े बड़े हेयर्स होते हैं। ये ज्यादातर नहीं, इनफैक्ट 99% ये जो ब्रीड्स होती हैं ये बर्फीले इलाके या फिर पहाड़ी इलाकों में होते हैं, क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा होती है, ठीक है, और नेचर ने इनको ऐसा बनाया है कि ठंड में रह सकते हैं आराम से। Divine Moon, please, bugger off the feed. We are not in a very, yeah. Wow, that's my mom watching Divine Moon. Thank you.
Anyway, ठीक है एनीवे हाँ, तो उनको बनाया इस तरह से है नेचर ने कि वो उस नेचर में उस मतलब वेदर में नेचर में सरवाइव कर सकें, ठीक है। तो वहां पे वो सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने नेचर ने इस तरह से बनाया है। ठीक वैसे ही आपके आसपास जो पेट्स हैं उनको भी आपके हेल्प के सहारे ही वो जिंदा रह पाएंगे। नेचर ने इस तरह से आपके पास ही उनको पैदा किया है, उनको बनाया है, उनको मतलब एक क्रिएचर की क्रिएट किया है। absolutely. ठीक है, तो नेचर की ही रिस्पेक्ट करो और इनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल ना करो। ठीक है, जितना हक आपको इज्जत से रहने का है इस सोसाइटी में, इन्हें भी रहने का है। आप इनकी हेल्प अगर कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, इनके लिए पानी खाना करते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट उनको मारो मत। नहीं कर पाते हो तो उनको टॉय की तरह अपने घर में मत रखो, यूज मत करो उनको। Right. ठीक है, अबैंडन मत करो इनफैक्ट उनको। ठीक है, घर में रखते भी हो तो तमीज से रखो। ठीक है, एक टॉय की तरह मत रखो। ठीक है, जितनी जान आप में, मुझ में, आपके बच्चे में है, उसमें भी उतनी है। जितने इमोशंस आप में, मुझ में हैं, उतने ही सेंसेस और इमोशन उसमें भी हैं। Absolutely. And I also want to say that when if you can't do anything, or if you think you're not capable enough to get into this, at least do not stop those people who are already doing for this cause. At least support them and make their voice heard, क्योंकि जो इस चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं, एटलीस्ट उनकी आवाज अपना दबाएं। अगर उनको हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सपोर्ट करें। दैट इज ऑल्सो, जिसे कहते हैं ना, तिनके से घड़ा बढ़ता है, तो थोड़ा सा आप एफर्ट वहां भी कर सकते हैं। It's done, blocked. Yeah. So again, because I'm not very sure whether I should be giving any guidance right now. We should be ending this week, but before that, we want to talk about this initiative that we are running from last 3 years. Is initiative for, I think, November, May, 3 years हो जाएंगे? Yeah, that is when Smokey passed away. Smokey was one of our dogs. She was a rescued low bloodline Labrador. Why I'm talking about this? Because there was a time even I had no knowledge of these things, and this is something which we're talking about. The initiative is called Smoky Pet Play Home. You will find that on Instagram and Facebook. They are not very active pages. Okay, from time to time हम कुछ अगर मन करता है तो उस पे डाल देते हैं या नहीं डालते हैं, कई बार तो मोस्टली टाइम मिलता ही नहीं है because of the other things that we have. So this Smoky Pet Play Home is nothing but an initiative. It's a home-based dog boarding. मतलब घर पे जिस तरह से आपके पास आपका पेट रहता है, ठीक उसी तरह से आपका पेट हमारे पास रहेगा। पेट से सिर्फ डॉग बोर्डिंग ही है, ठीक है। और कोई पेट अभी हम, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें जिन किचन या चीजों की कैट नॉलेज है हम वही करते हैं। But anyway, when I talked about Smokey, she was a rescued breed, and then she stayed with us for about 11 years, and she passed away in November, on 4th of November, which was a very, very great day for us. And that is when, in about 2 or 3 days, we decided to open Smoky Pet Play Home and inviting the pets into our house. And we've been successfully running this thing for past 3 years. We work on references and we choose the people that we connect with. We choose the pets as well, because our home is not open for all. We are open to all the pets, but again, it depends on the kind of people who are coming along with it. So, अगर आप true dog lover हैं, okay, and if you're staying in sector 49 in Gurgaon, you can find us on the maps also. Smoky Pet Play Home is there, and there are times when, whenever, depends on our capabilities and our timings, whenever we can we board the dogs. There are times we don't board the dogs as well, because हमारा main काम वो नहीं है। And इससे जो भी हमें whatever we earn from this boarding, okay, it is put to good use. राइट। सो गाइज, स्मोकी पेट प्ले हमारा ओपन करने का सिर्फ रीजन यही था, बिकॉज वी आर अ पेट लवर, दैट्स व्हाई वी ओपन इट। ठीक है, और इससे जो भी हमारी मतलब एक तरह की अर्निंग, प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग ये नहीं है हमारा। प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग आप सभी को पता ही है क्या है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, वो भी है, मतलब आप सबकी कृपा से अच्छा खासा चल रहा है। हाँ जी, तो इससे जो एक छोटा बड़ा जो भी अमाउंट आता है, हम उसका अच्छा खासा परसेंटेज है, कुछ परसेंट हम ज्यादातर डोनेट करते हैं। ठीक है, और वो डोनेशन उन्हीं के लिए जाते हैं जो लोग हमारे पास आते हैं, मतलब पेट हमारे पास आते हैं, तो अगर किसी पेट को जरूरत पड़ जाती है तो हम डोनेट भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप से भी हम जुड़े हुए हैं। Yes. इनफैक्ट हम अडॉप्शन भी करवाते हैं, अगर
हम पे पॉसिबल हो पाता है तो ठीक है। Right now, I would like to share a very interesting story over here before we close this feed. And since we do not have any questions for the tarot guidance, so I don't think it's required right now. So we're going to just end this feed before this. So what I would like to mention here is that there was a guest which we had in our boarding. It kept coming to us. His name is Amigo. He's a Cocker Spaniel. Okay. He used to come to our house and he used to stay here. He used to come for boarding. Very mild, toilet trained, very docile dog, and he is one of the best pets that you can get. He's 5 years old. अभी recently क्या हुआ, we got a inquiry call from them in the morning. We actually thought that Amigo is coming again because we love to board him. He's one of the sweetest pets that we get in our boarding. But the query was a little different. The query was that that guy, whoever was his owner, called us and told us that we cannot manage him in the house and we have a 1-year-old baby, and there were other complications. We're not sharing his personal story over here. We're just telling you the gist. Okay. Um, he just told us that I cannot manage him, and he wanted to leave Amigo at a shelter. So, we instinctively told him, because we know the dog, we told him that, send the dog back here, and we are going to foster him till the time he will get adopted, and we are taking no charges from this guy. And we have his Amigo Amigo, over here, and we Amigo, would like come. to show him to you. Come here, come here. He's आ जाओ, sleeping right now, but Amigo, come here. come. Come here, baby. Come here. Let's go for a walk. Walk पे चल रहे हैं? चलो. आ जाओ. We'll get him over here so that we can show you. Good And he is looking for a home. Now here we are not asking for any donations because we have enough to feed him. We don't have a problem keeping him, but this is a boarding, so we cannot keep him permanently. So we are looking for a family, a dog lover per se, and we want this family should have good space for him. He eats anything that you give him. He's fond of chicken. He likes paneer. And he's looking and staring at us right now. Amigo, come here. Come, come, come. Get chicken salami from there and you can. Is in the it's in the freezer in the top shelf. Get the salami. He'll come to run. So he eats everything, home cooked food basically. Pedigree bhi khate hai, and we just need 2 times walk. And he's toilet trained, so he doesn't go anywhere. In the sense कि आपका घर गंदा नहीं करने वाला है, and all of that thing. He's very very friendly with the kids, and now you can see him because we've got his favorite thing, which is a salami, and now you can see him. This is Amigo. Amigo, come here. You want to eat? This is Amigo. Okay, and come here, baby. Come here. No, put the camera. Yeah. Now he's here because he loves chicken, and this is the one which we are showing it to you. He's a lovely, lovely pooch. He's very docile, and actually he sleeps with you. He needs human touch all the time. So we are looking for a family जो कि इसको रख सके और इसको अकेला ना छोड़े. ये he's like a satellite. He's like the moon to the earth. जहाँ भी आप बैठोगे वहीं पे बैठा रहेगा. So अभी तो फिलहाल he's around Rahul. Even when Rahul is working out, if he's at one corner, he'll go and sit over there. Now he's eating nicely. Don't give him more. I've already fed him. Okay. So, if you are one of the people who are interested in adopting him, you're looking for a family, and please share this video with other people, because the reason for doing voice for voiceless later on, we didn't know कि हम लोग ये जो feed करेंगे तो हमारे पास actually, we'll have this thing to deal with, and yeah. So thank you for watching, guys, and if you are interested in adopting him, आप हमारे Facebook page पे जो number है वहाँ contact कर सकते हैं, और if you want to help in any other way, please contact over there. Sit down. And we are just looking forward for your help. If you have compassion for the animals, and if you're willing to give him a home. He's 5 years. He spent 5 years in a family. And the thing that pains me the most is that he's been just cut off from there. He's been here from last few days, and we see him sad at times. We see him not interacting at all, and all he needs is love. All he needs to be is cuddle. He's not very interested in food also if he's not feeling good. So again, what we are saying and what we are looking forward for is that
somebody could step up and either help us in adoption and paying it forward. And we have a question. So card pull कर सकते हैं. No, I am not willing to pull any cards. ठीक है. I am willing to pull cards for those people who are listening to this feed and who are understanding this feed. And You are late. Yes, you're late, and this guidance is only going to be which I wanted. This guidance wanted to people to actually share this feed. I don't think this feed is shared as well. Let me check if the feed is shared. Where's your phone? Yeah. Sure. Harman Saini, I am going to give you an oracle reading. Okay. Have you shared this feed? She shared this. Okay. The only deck I have near me is my oracle deck, and with my husband, how would you bring up playing with my emotion? Will it take me back to the marriage? Just tell me sure how. You can contact me for detailed reading because this requires a detailed reading, Harman, but I can give you the guidance, whatever I can pick. Okay. Okay, the guidance over here, it's coming with the water card. Water card, Harman, is about clean, अपने आप को deeply clean करने की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर you need a deeper inner cleansing, tending to your inner self and outer cleansing as well. So purify yourself. The energy around you is not too good. I don't know if you're staying with your husband at the moment or not, and if he's playing with your emotions, because it looks like you will get the clarity once you पानी का जो एलिमेंट है उसको ऑनर करोगे आप, तो आपकी चीजें लाइन पे आएंगी. मैं सीधी सीधी रेमेडी आपको बता रही हूँ, जो मैं जनरली नहीं बताती हूँ इस तरह की चीजें. सो प्लीज take a glass of water, Harman. Set your intention clearly towards it and drink that water and then seek your answer. You will get your answer. अगर आपका टाइम intention visualize करने में आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं, that means it is either way. If you do not have any doubts and if you're successfully able to visualize the desired outcome, that means you're going to get that outcome. So your questions require detailed reading. This is what I can tell you right now, because we are not doing any detailed reading here. It's just one card. So let's send this feed. धरनी वाराशा, आई होप आपने फीड को शेयर किया होगा और साथ में इस पेज को भी लाइक किया होगा, लेकिन अभी हम रीडिंग नहीं दे पाएंगे क्योंकि इट्स टू लेट. ठीक है, सो सॉरी. तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे रीडिंग आपको जरूर देंगे अगर टैरो का फीड होगा तो. I think next feed is the tarot feed only. We are talking about affirmations. So please just join us for an interesting discussion on affirmations, and then we're doing tarot in and out. And this feed was for Amigo, for the voice of the voiceless. So please share this feed, and we would like to take your leave now. Thank you so much for watching, guys. It was lovely talking with you. So guys, thank you so much. ठीक है, जल्दी मिलते हैं. And please help us with Amigo. She's super friendly. Bye bye.